Coorg or Kodagu, situated in the lap of Western Ghats and the state of Karnataka, is a beautiful tourist attraction in South India. It is also known as the Scotland of India, and the best time to visit Coorg is from September to June. अगर आप मैंगलोर, बेंगलुरु या मैसूर में रहते हैं तो आप इजीली कार या बाइक से ट्रैवल कर सकते हैं। Otherwise, there is a direct flight or train to Mysore or Bengaluru airport. अगर आप कुर्ग आना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन का समय लेकर आएं। Coorg is the ultimate holiday destination and is famous for coffee plantations, mountain peaks, and cascading waterfalls. Welcome back to our channel. Today I will be showing you top 11 places that you must visit when you are in Coorg. So चलिए शुरू करते हैं। Dubare elephant is a must experience for all the elephant lover in you. It has about 150 elephants in various camps. You can take part in the activity like bathing the elephant, feeding the elephant, and clicking photos with them. I would suggest you should go early morning to enjoy this camp. नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। Inside are 3 statues of the bodhisattvas which are made of gold, giving this place its name. You must spend some peaceful time inside this monastery. Also enjoy the Tibetan market near the monastery and the original Tibetan dish lapping. The monastery is grand and beautiful. Its dome is visible from a distance. And yes, it is the largest Tibetan settlement in India. Raja's seat is located in the middle of a garden called Gandhi Mandap. ये फेमस है अपने स्टनिंग पैनोरेमिक व्यूज एंड सनसेट के लिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग जाएं। यहाँ एक्टिविटीज जैसे जिप लाइनिंग, टॉय ट्रेन, ऐसी कई एक्टिविटीज का आनंद भी उठा सकते हैं। Nisargdham is also known as the island by local people. It's famous for thick bamboo groves, teak trees and sandalwood. Elephant ride और boating यहाँ पे major attractions हैं। और हाँ, riverside cottages देखना मत भूलिएगा। Our next destination is कोटे एबे फॉल्स। ये एक सीक्रेट फॉल है और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं आए हैं तो मंडलपट्टी से आप यहाँ पे जीप राइड लेके भी आ सकते हैं। ये एक लेस नोन वाटरफॉल है तो यहाँ का आप पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। Our next stop is Chikli Hole Reservoir. Located in between Madikeri and Kushalnagar, it is not very popular but offers some good moments. Best time to visit is between June to March in monsoon.
Raja's tomb is built in Islamic style of architecture. ये tomb well preserved है और recently इसको refurnished किया गया है. यहाँ से मदिकेरी टाउन का नजारा देखने लायक है. Our next destination is Pappy's Bridge of Coorg. This is the first class bridge in Karnataka और ये 80 feet high है. 6 kilometers from Madikeri and can get too crowded on weekends. So please avoid on weekends. You will get 10 minutes to spend on this glass bridge and ample amount of parking space is also available. अगर आप भी मेरी तरह एक कॉफी लवर हैं, तो पैपीज कॉफी प्लांटेशन तो मिस करना बनता ही नहीं है. With the help of the guide, you can know about the varieties of coffee, its cultivation process, months in which the coffee is grown, and so much information. आगे जाने के पहले लेट मी प्लीज रिमाइंड यू, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. ओमकारेश्वरा टेम्पल ये कुर्ग का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है. इट वॉज बिल्ट बाय किंग लिंगराजेंद्र II एंड दिस इज द फर्स्ट शिव टेम्पल बिल्ट इन मोहम्मदन स्टाइल. Last but not the least, we are at Abbey Falls. Water falling from a cliff with a height of 70 feet is indeed a sight to watch. During monsoon, it is a must-visit place. Okay guys, hope you liked the video. Please don't forget to like, share and subscribe. And if you are planning to Coorg and you have any questions, do ask in comment section. Bye bye. Take care.